I am CS Dr. Rajkumar Kankariya welcomes you to my YouTube channel CS Dr. Rajkumar Kankariya RKFL 2177 Skill India Mission. Friends, it is said that अगर आपके पास दिल है तो आपके पास विल है, और अगर आपके पास विल है तो आप दुनिया का कोई भी स्किल एक्वायर कर सकते हो। तो ये दिल, विल और स्किल का मिशन के लिए जुड़िए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है, फिर से दोहराता हूँ, CS डॉक्टर राजकुमार कांकरिया RKFL 2177 स्किल इंडिया मिशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। So let us first see capital budgeting, its meaning and importance. So capital budgeting is a financial management tool which evaluates major projects and investments. It is extremely important for strategic investment decisions, merger acquisition, project expansion, project selection, especially project comparison, investment comparison, future cash inflows, and all that we need. This is a beautiful technique we have to get the exact evaluation of the projects or investments. So what is the process? Capital budgeting process. Let us quickly see this. Capture new investment opportunities. Forecast the future cash flows and risk associated. जो भी नई अपॉर्चुनिटीज आप देखने वाले हो उसमें कब कब आपको रिटर्न्स और कैसे मिलेंगे, उसमें रिस्क कितनी एसोसिएटेड है वो आप देखोगे. Then evaluate and compare the profitability of alternate projects, right, or a project. Then prepare the capital budget. Once आपने कोई एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया, उसका कैपिटल बजट प्रिपेयर कीजिए. देन पोस्ट रिव्यू एंड ऑडिट, और उसे कंटिन्यूस रिव्यू और ऑडिट करना बहुत जरूरी है. दिस वाज द प्रोसेस. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, capital budgeting techniques. So there are mainly two types of techniques. Modern technique, which is also called as discounted cash flow method, and traditional methods or techniques which were earlier used. Now, what are the modern techniques? Net present value, NPV, profitability index, PI, and internal rate of return, IRR. What are the traditional methods? Payback period and accounting rate of return. In the SPPU examination, these methods are asked: net present value, profitability index, payback period, and internal rate of return. So the modern methods are just like Rohit, Virat, and Surya Kumar Yadav, accurate, fast, and they are reliable. And the other one, the traditional one, you can see and imagine from the pictures, right? So let us move ahead and understand the first method, that is net present value. So net present value takes into account the time value of money over the full life or the project to map the true profitability of the project or available investment options. What is the formula to calculate NPV, net present value, equals to present values of cash inflows, that is future cash inflows, less initial investment. So based on that, how to make decisions for a project or investments based on NPV? If NPV is greater than 0, then accept the project. Let me take you through the example. Suppose किसी प्रोजेक्ट में मुझे इनिशियली 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़े, और मुझे जितने भी साल जो भी इनकमिंग या फ्यूचर कैश इनफ्लोस आई एम गोइंग टू गेट, जो मुझे मिलने वाले हैं, उसका टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो है, सपोज इट इज 3,60,000. सो 3,60,000 माइनस 2 लाख वुड बी 1,40,000. तो यहां पर दिस इज greater than 0, so this NPV is greater than 0, is hence accept the project. If NPV is less than 0, then naturally reject the project. If NPV is equal to 0, then you may accept or reject the project. So let us take you through a small example, project A and project B. We will compare these two projects. If initial investment for project A is 6 lakh and we are going to get future cash inflows, total future
cash inflows, that is the total present value of cash inflows 10 lakh, then 10 lakh minus 6 lakh would be 4 lakh. So NPV here is greater than 0. Now for project B, initial investment 10 lakh, we are going to get only 9 lakh rupees in the future. So 1 lakh will be a deficit, जो कि हमें नुकसान होने वाला है. So net present value is naturally less than 0. Hence, to make the decision, see, NPV here is 4 lakhs, that is greater than 0, and in plan B, it is, or project B, it is less than 0. So the decision would be accept project A and reject project B. So now how to calculate NPV based on discounted factor? Let us take one example. So this is an illustration. RKFL Limited involves a total initial investment of rupees 5 lakhs. इनिशियली 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है. फ्यूचर जो कैश आउटफ्लो है अभी का वो था 5 लाख रुपए. तो आरकेएफएल ने प्रोजेक्ट आरके में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एंड इट इज एस्टिमेटेड टू जनरेट फ्यूचर कैश इनफ्लो फॉर 7 years. तो आरकेएफएल क्या है कि इनिशियली 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आरकेएफएल ने की है इन प्रोजेक्ट आरके, और 7 सालों तक अगले उसके रिटर्न्स भी उनको मिलेंगे, और ऑफ कोर्स एट द एंड स्क्रैप वैल्यू भी दी है उसकी. सो ईयर 1 में कैश इनफ्लो 50,000, देन 1,20,000. थर्ड ईयर में कैश इनफ्लो 2,20,000, 2,50,000, 2 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख. एंड द स्क्रैप वैल्यू, मतलब जब ऑलमोस्ट पूरा प्रोजेक्ट खत्म होगा तो जो भी एसेट्स रहेगी उसको अगर बेच के हमको मिलेंगे 40,000. सो एनपीवी इसके बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट अस क्विकली सी दिस. मैंने क्या किया, जो एक टेबल बनाया, फर्स्ट कॉलम जो है वो है ईयर्स का, तो ईयर 1 to 7, और स्क्रैप वैल्यू भी 7th ईयर में ही मैंने ली है. नाउ कैश इनफ्लो इज द सेकेंड कॉलम. थर्ड कॉलम इज द डिस्काउंट फैक्टर्स एट द रेट 10%. ये 10% ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है. हियर यू कैन सी रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है. नाउ डिस्काउंट कैश इनफ्लोज एट 10%. सो मैंने क्या किया, जितने भी कैश इनफ्लोज है उसे ईयर वाइज लिख लिया. एंड नाउ डिस्काउंट फैक्टर्स जो है फॉर ₹1, for first year it is 0.9091, then for second year it is 8264. तो अगर ₹1 का जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है उसका वैल्यू 9091 आज प्रेजेंट में रहेगा, तो व्हाट वुड बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 50,000 विच आई विल बी गेटिंग आफ्टर अ ईयर. दिस इज आफ्टर 2 years, दिस इज आफ्टर 3 years. सो ये हर एक को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस डिस्काउंटिंग फैक्टर से, और ये जो फोर्थ कॉलम है इसमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें मिलेगी. सो हर एक कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, सो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.9091. सो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको मिलेगा 45,455. So here in this table it is given. Now for the next figure, 1,20,000 multiplied by 0.8264. So we are going to get 99,174 as the present value of cash inflow. Similarly for all the years आपको इनसे multiply करना है, you will be getting the present values, right? Now for the 7th year जो भी scrap value उसको भी 7th year का जो discounting factor उससे multiply करना है, तो you will be getting this value. Now the most important is अब इसका total कर लीजिए. So for all these figures, if we are going to total it, so you will be getting the total present value 8,40,908. So 8,40,908. So initially you have invested in project RK 5 lakh rupees and you will be getting 8,40,908. So your NPV is positive, that is greater than 0. Here you can see NPV is positive. You have invested 5 lakh and you will be getting 8,40,908. So just go for the project. Is that is can go for project. I hope you have understood this. So this is the NPV calculations. Now based on this,
if you want to calculate similarly in this problem, we can also calculate profitability index. Till now we have calculated this NPV. Now we will calculate profitability index, that is PI. So just to calculate this, the formula is PI equals to present value, total present value of future cash inflows. Here it is 8,40,000, right? So 8,40,908 divided by initial investment. What is the initial investment? Is 5 lakhs. So the ratio is going to come, that would be the profitability index of. So if I'll simply calculate this on calculator, so 8,40,908 divided by 5 lakhs, so I'll be getting 1.68. So PI equals to 1.68. So here we have understood how to calculate NPV and profitability index, right? So now the third method, which is a traditional method, these are all modern methods. Now the third method, which is a traditional method, that is payback period. Now how to calculate payback period? You don't need to go for this factor calculation. Don't go for this for to calculate payback period. जस्ट सिंपली जो कैश इनफ्लो हमको मिला है उसके बेसिस पे हमें पेबैक पीरियड निकालना। हमने इनिशियली 5 लाख रुपए इन्वेस्ट अगर किए हैं तो मुझे सिंपली देखना है कि 5 लाख रुपए मेरा किस साल में रिकवर होने वाला है। ईयर 1 में 50,000, ईयर 2 में 2 लाख, ईयर 3 में 2,20,000, तो मेरा टोटल हो जाता है 4,90,000। और फोर्थ ईयर में जब मैं जाता हूँ तो थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में मेरा इन्वेस्टमेंट जो है 5 लाख का वो रिकवर हो रहा है। तो दिस 5 lakhs मेरा थर्ड ईयर, मतलब मुझे थर्ड ईयर के बाद 3 इयर्स प्लस मंथ्स में मिलने वाला है। सो मुझे 5 लाख में से अगर मैं 4,90,000, जो कि मुझे 3 साल तक मिलता है यहाँ पर, 50,000, 1,20,000 और 2,20,000, आई गेस इट इज 2 लाख, 3,40,000 प्लस 50,